I don't believe in God or religion the way it is portrayed, but I certainly don't believe the way the God is portrayed today. That I definitely don't believe in. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की तादाद मुसलमानों की बनिस्बत ज़्यादा है, तो इसी वजह से इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो कि एथीस्ट होते हैं, यानी वो किसी भी मज़हब को नहीं मानते। ना वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं जो कि सच्चा वाहिद खुदा है, और ना ही वो किसी झूठे खुदाओं पर यकीन रखते हैं। तो यहाँ पर एक मशहूर साउथ इंडियन प्रोड्यूसर जिसका नाम राजामौली है, वो भी ये जाहिर करता है कि वो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता है। इसकी वजह बताते हुए कहता है कि जब किसी भी मजहब के लोग खुदा के तस्वर को बयान करते हैं कि एक अजीब सी ताकत है और एक सुपर नेचुरल चीज़ है, तो इसलिए मेरा दिमाग ये सब चीज़ें नहीं मानता। Knowledge thinkers who talk about the superpower that controls the whole universe, those kind of things I don't understand, just like I don't understand. अब यहाँ पर आपको बताते चलें कि डॉक्टर जाकिर नाइक से बेहतर और कौन बयान कर सकता है कि खुदा की ज़ात क्या है। तो एक ऐसा ही एथीस्ट डॉक्टर जाकिर नाइक से एक तकरीब के दौरान सवाल करते हुए कहता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक, तुम एक एथीस्ट को कैसे मुतमईन कर सकते हो कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है, जबकि वो अल्लाह की ज़ात पर यकीन ही नहीं रखता। How can you prove to an atheist scientifically the existence of God? तो डॉक्टर जाकिर नाइक माइक की तरफ बढ़ने लगे और जवाब देते हुए कहते हैं कि पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर हिंदू इसलिए हिंदू हैं क्योंकि उनके वालिदैन हिंदू होते हैं और वो हिंदू घराने में पैदा हुए होते हैं, जबकि इसी तरह ऐसे मुसलमान भी हैं जो कि सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि वो भी मुसलमान घर में पैदा हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं होता और मजहब को फॉलो करते ही जाते हैं। जबकि एथीस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि लकीर के फ़कीर नहीं होते और ख़ुद सोचते हैं, तो अक्सर लोग इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि कोई खुदा नहीं है और वो एथीस्ट बन जाते हैं। The first thing I will do is that I will congratulate that atheist. He is a Hindu because father is a Hindu. He is a Christian because father is a Christian. Some Muslims are Muslim because their fathers are Muslim. This person, though he may be coming from a religious background, he does not believe in the false god which his parents attribute to. लेकिन असल में वो आधी शहादत देता है कि कोई खुदा नहीं है, यानी ला इलाहा। ये असल में कलमे का पहला हिस्सा है और इसका दूसरा हिस्सा है इल्लल्लाह, यानी कि सिर्फ अल्लाह है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अभी इंशाल्लाह दूसरा हिस्सा मैं साबित करवा दूंगा, तो आपको पूरे कलमे का यकीन आ जाएगा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा मगर एक अल्लाह के। He's accepted the first part of the Shahada, the first part of the Islamic creed, La ilaha, there is no God. Now my job is to prove illallah, but Allah, which I shall do inshallah. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही कि जब दीगर मज़ाहिब के गैर मुस्लिम मुझसे सवाल करते हैं तो इनको समझाने में मुश्किल होती है क्योंकि वो झूठे खुदा को मानते हैं। पहले मुझे उनके दिमाग से झूठे खुदा का तस्वुर मिटाना होता है और बाद में उसे साबित करवाना होता है कि अल्लाह ही खुदा है। लेकिन तुम्हारे मामले में मेरा आधा काम तो हो गया है, झूठे खुदा को भी तुम नहीं मानते, सिर्फ हकीकी खुदा को साबित करवाना है, जो कि मैं अभी करवा दूंगा इंशाल्लाह। To the other people, I have to first remove the wrong concept of God and then prove the right concept of Allah subhanahu wa ta'ala. Here half my job is done. He has already said La ilaha. There's no God. Now I have to prove illallah, but Allah, which I shall do inshallah. खुदा की ज़ात को साबित करवाने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस एथीस्ट से कहा कि जब आपके सामने कोई भी चीज़ रखी जाती है तो उस चीज़ को तुम इस्तेमाल करने लगो तो बेहतर तरीके से समझा जाता है कि इस चीज़ को चलाना कैसे है। तो जाहिर सी बात है कि जहन में आएगा कि जिसने ये चीज़ बनाई है वही बता सकता है कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना होता है और ये कैसे काम करेगा। No human being in the world knows about this object. If it's brought in front of you and if you're asked that who will be the first person who will be able to tell you the mechanism of this unidentified object, you have to ask them the question. Who is the first person who will be able to tell you the mechanism of this new object? तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद कहा कि जब तुम किसी से पूछोगे कि ये कायनात किस तरह बनी है तो वो कहेगा जाहिर सी बात है बिग बैंग से, यानी पहले यहाँ स्मोक हुआ करता था, फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिससे जमीन और आसमान वजूद में आए। उस धमाके को साइंसदानों ने बिग बैंग का नाम दिया है।
لیکن سائنسدانوں نے یہ حال ہی میں پتہ لگایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں 1400 سال پہلے کیا ہوا ہے، اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سب اتفاق سے ہوا ہے تو اس پر مزید بات نہ کریں اور آگے اور ثبوتوں کی طرف جا کے پوچھو. How did the universe come into existence? How was it formed? We will tell you by the Big Bang Theory. Tell him the Quran mentions in Surah Anbiya, chapter 21, verse number 30, about the Big Bang Theory. Who could have mentioned this in the Quran 1400 years ago? تو ڈاکٹر ذاکر نائک آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ سائنسدانوں نے یہ پتہ لگایا ہے کہ چاند سے جو روشنی آتی ہے یہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ سورج کی روشنی ہے جو چاند سے ریفلیکٹ ہو کر زمین پر آتی ہے. لیکن تم یہ بھی دیکھ لو، سائنس نے یہ زیادہ سے زیادہ 1 صدی پہلے دریافت کیا ہے، جبکہ قرآن مجید میں تو اس کا بھی ذکر 1400 سال پہلے کا ہو چکا ہے. کون بتا سکتا تھا کہ یہ چاند اپنی روشنی نہیں رکھتا؟ You ask him, he'll tell you, yes. The light of the moon is reflected light. It's not its own light. When we discovered, he will tell you recently, yesterday, 50 years back, 100 years back, yesterday in science. You tell him, the Quran mentions that the light of the moon is reflected light 1400 years ago. مزید اس طرح سورج کی مثال بھی دی. سورج ساکن ہے یا گھوم رہا ہے، یہ بھی حال ہی میں سائنسدانوں نے ثابت کروایا، لیکن قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہو چکا ہے. You ask him, is it stationary? He'll say, no, it's rotating and revolving. When you learn this, he will tell you yesterday, 50 years back, 100 years back. Quran mentions this 1400 years ago. He will hesitate, but may say, maybe some intelligent person wrote it. Don't argue with him. Continue. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا ان سب باتوں سے مطلب یہ تھا کہ جب کسی چیز کا شبہ ہوتا ہے تو سائنس ثابت کروا ہی دیتی ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن تم ان دلیلوں سے خدا کی ذات کو ثابت کروا سکتے ہو. اب اگر کوئی یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ قرآن شریف کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو وہ یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ 1400 سال پہلے کوئی اتنا ذہین ہو سکتا ہے کہ سب کچھ پہلے سے لکھ دیا. یعنی تب تو سائنس نے اتنی ترقی بھی نہیں کی تھی، تو کوئی سائنسدان بھی تو اس وقت نہیں تھا. تو ان سب سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ حقیقی خدا تک پہنچ ہی جائے گا. ناظرین، قرآن میں خود بھی لکھا ہے کہ اے انسان، اس کائنات میں تحقیق کرو تاکہ تم میری نشانیاں دیکھو. اور پھر عقل والوں کے لیے اس دنیا میں بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن بعض بدقسمت لوگ سوچتے نہیں ہیں. ساتھ میں ہی ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان باتوں سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.